Hello everyone, welcome. Am I audible? All of you. Join as soon as possible, dear friends. आज हम लोग कुछ मजेदार टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज द पार्सिंग. देखिए पार्सिंग जो है वो आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, ठीक है ना. लेकिन कुछ डिफरेंट अप्रोच विद द फील्ड. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक द पार्सिंग which is the part of the compiler with the field. Okay, so join as soon as possible, dear students. Okay, लेट्स क्रैक गेट ईएसी विथ इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि अनअकैडमी जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है. सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट बी लेट, गेट द सब्सक्रिप्शन नाउ and start your preparation with the unlimited live and the recorded video lectures and with the India's top educators. Myself Ajay Das. I am MTech in Computer Science. I have a teaching experience of 8+ years and till now I have mentored almost 20,000 engineering students for the GATE and training and placement. So work as a freelancer in many reputed institutes of India. For that I have visited almost every engineering college of UP and Bihar and Kolkata. And my dear friends, I have taken the classes in Kolkata, Chandigarh, Delhi, Ahmedabad, Dehradun, everywhere. So qualified the GATE exam 5 times below the AIR 500s and also qualified the Chhattisgarh State Electricity Board exam with the AIR 8. So download the Unacademy app. Download the Unacademy app and start your preparation sitting anywhere, anytime. So my dear friend, don't be late. अभी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और अपने प्रिपरेशन का स्टार्ट करिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ, ठीक है ना. चलिए, सो व्हाट यू विल गेट, दिस इज द ऑलवेज अ मेजर क्वेश्चन. स्टूडेंट हमेशा सोचता है कि भाई मैं अनअकैडमी ही क्यों ज्वाइन करूं. दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक सा थिंग लिस्टेड है, इसके अलावा जो मेन रीजन है वो मैं आपको बताने वाला हूं. सो लेट्स सी. The first thing you are going to have once you will take a subscription inside the Unacademy is the daily live classes. Of course, आपका live classes daily होगा, schedule plan way में होगा, तो आप उसको day by day attend कर सकते हैं. The second one is the structure courses and PDF. आप जो भी classes attend कर रहे हो उसका structure courses मतलब structure way में वो planned होंगे और उसके PDF भी आपको time to time updated होते रहेंगे, आपको mail पे मिलता रहेगा. Next one is the live test and quizzes. See, whenever you are looking for any competitive exam and preparing for any competitive exam, time to time self evaluation is very necessary. अपने आप को इवेल्युएट करना बहुत ही जरूरी है कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है, कहां पर मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कितना और एफर्ट मुझे डालना है, किस सब्जेक्ट पे डालना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? For that reason, the Unacademy conduct the live test and quizzes. Quizzes generally arise like planned in a random manner. सपोज आपकी क्लास चल रही है और अचानक से आपके क्विज स्टार्ट हो जाएंगे फॉर द 10 मिनट्स वेयर यू विल हैव लाइक 5 to 10 क्वेश्चंस एंड द लाइव टेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज फॉर ऑल ओवर इंडिया. सो पूरे इंडिया लेवल पे आपका क्या रैंकिंग है, क्या परफॉर्मेंस है, ये जज करना मेरे दोस्त बहुत ही जरूरी है. सो नेक्स्ट थिंग, यू आर गोइंग टू हैव अ अनलिमिटेड लाइव एक्सेस. मीन्स whatever the lecture you are attending, and unfortunately if you are not able to attend, and if after attending you are having some confusion or you forget some of the things, in all the situation you can re-attend the lectures again and again, my dear friends, again and again until you get the entire concept. So हमारा ultimate जो motive होता है वो आप तक concepts पहुंचाना होता है, न्यूमेरिकल के सॉल्व करने के अप्रोच पहुंचाना होता है, ताकि जब आप फाइनली गेट के लिए अपियर हो तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस बेस्ट हो और आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने रैंक को बेहतर कर सके. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इज द मेन weapon that the Unacademy have? That is the India's best educator. So my dear friend, no doubt, learn with the best educator, or you can say the top educators. So I have listed only few of the educators from the electrical, electronics and civil, similarly from the mechanical and electrical. So if you want to know more about the educators, what you can do, you can download the Unacademy learning app and according to your branch you can see the profile of each and every educator who are associated with the Unacademy. देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले ये बहुत ही जरूरी है सेल्फ सेटिस्फैक्शन. सो मैं चाहता हूं कि आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए, अपने ब्रांच के अकॉर्डिंगली जितने भी एडुकेटर इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं
उनके प्रोफाइल को चेक करिए। प्रोफाइल को चेक करने का मतलब होता है उनके एक्सपीरियंस को चेक करिए, ठीक है ना, उनके बैकग्राउंड हिस्ट्री को चेक करिए, किस तरह का रिजल्ट उन्होंने आज तक दिया है, ठीक है ना। सेकंड थर्ड थिंग इज उनके स्पेशल क्लास को अटेंड करिए। देखिए स्पेशल जो क्लास होता है वो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपको कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप उनके स्पेशल क्लास से ये जजमेंट कर सकते हो कि क्या मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं का सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि मैं जानता हूं वंस यू विल अटेंड free demo classes which is under the special classes and which is also available in the YouTube, you will never think about anything else. आप किसी दूसरे चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। Definitely you will join and you will start your preparation with the best energy and with the best ambition. Got it? So this is the things. This is the things. Now अब इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आई एम नॉट जस्ट एबल टू एक्युमुलेट ऑल द क्वेश्चंस, बट सम ऑफ द थिंग्स आर देयर विच आई कैन रियली फील। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साउथ है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, इन सब साइड के जगह के स्टूडेंट्स होते हैं, दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। बहुत स्टूडेंट को लगता है कि भाई मैक्सिमम जो एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी में वो हिंदी में लेक्चर्स ले रहे हैं एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल। सो द स्टूडेंट अलग अलग जगहों पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यहाँ पर बहुत ही फ्यू एडुकेटर्स हैं जो आप यहाँ पर फ्री क्लासेस अटेंड कर रहे हो, बट वंस यू विल डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप यू विल फाइंड सम ऑफ द एडुकेटर्स हु आर टेकिंग द लेक्चर्स in English and some of the educators who are taking the lecture in Hindi. So those who are feeling comfortable in Hindi, they can attend the lectures of those educators. और अगर कोई भी ऐसा students है, those who are not feeling comfortable in Hindi, they can attend the classes in English. So कुछ free classes को देख कर करके नहीं decide करना है, ठीक है ना। आप YouTube में classes attend कर रहे हैं, mostly faculty are taking the classes in Hindi. So never think that none of the faculties are teaching in English. So never think about this. Some of the faculties are there who will take your class completely in English. So don't keep any doubts and just start your preparation. Download the Unacademy app. My dear friends, again and again I am saying, जब तक आप डाउनलोड नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कितने ऐसे एडुकेटर्स हैं जो कि इंग्लिश में अपने लेक्चर्स को ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिकॉज वी बिलीव वी विल avail the facilities for every kind of students. Got it? So under the GATE ESE there are various branches, but for which branches the Unacademy is offering you for the preparation of the GATE and ESE, I have already listed over here. So you can see electronics, computer science, IT, production engineering, instrumentation, mathematics, chemical engineering and instrumentation, and electrical, civil, everything is there for the GATE and ESE which Unacademy is offering you. So according to your branch you can take the subscription, but if you want to take the subscription then never forget to use the code IFA. My dear friends, again and again I will tell you, never forget to use the code IFA to get minimum 10% discount. Are you getting my point or not? Now देखिए बहुत पहले से प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी में चलता आ रहा था। दिस इज अ प्लस सब्सक्रिप्शन विच इज कमिंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स, बट व्हाट द रिसेंटली अनअकैडमी हैज इनोवेटेड फॉर यू, दैट इज द आइकनिक सब्सक्रिप्शन। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ये बहुत पहले से चलता आ रहा था और ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है टू परफॉर्म द बेटर रैंक। उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज्यादा सीरियस है, जो बहुत अच्छा गाइडलाइन चाहते हैं और जो अपने रैंक को टॉप 10 टॉप 100 डिजिट में देखना चाहते हैं, उनके लिए आइकनिक काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शंस द अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू। See over here, see the fee structure of the plus and see the fee structure of the iconic. So my dear friends, these are the month wise fee structure which is already mentioned over here. 1 month का 5500 है, 3 months का 13750 है. Similarly for the 6 month it is a 24750, and similarly for the 12 month it is a 30250, and for the 18 months and the 24 months, my dear friend, बहुत सारे हैं, लेकिन what I will suggest you personally,
देखिए अगर आप न्यू है इस प्रिपरेशंस के लिए, इस जर्नी के लिए, तो आई विल सजेस्ट दैट एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिक्वायर्ड एटलीस्ट 8 to 10 month ऑफ डेडिकेशन। अगर वहां पर सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, देखिए अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, बैंकिंग में 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है ना, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, नथिंग एल्स। सो इसके लिए 6 month मोर देन इनफ है। लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर द IIT JEE, लुकिंग फॉर द गेट ESE, UPSC, कैट, JRE, ये सब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना, जहां पर आपके औहदे भी डिफरेंट होंगे। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर द गेट एंड ESE प्रिपरेशन, सी द गेट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड एटलीस्ट 8 to 10 months and the ESE preparation required 12 to 15 months, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होते हैं और कंप्यूटर साइंस के लिए ESE नहीं है। ESE मीन्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, जो कि ESE के लिए कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं, वो कोर ब्रांचेस के लिए होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड सिविल, ठीक है ना। इन ब्रांचेस के लिए बेसिकली ESE के प्रिपरेशंस होते हैं। तो अगर आप रियली डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो, देन आई विल सजेस्ट एटलीस्ट गो फॉर द 12 month। But if you think you are in a second year or the third year, then you can opt the 18 months or 24 months। अगर आपको लगता है कि आपको 2023 का तैयारी करना है, if you think you have to prepare for the GATE 2023 or 24, you can go for the 18 month or the 24 month of subscription। In that situation, your fees will be this. This is your actual fees, not an applicable fees। I think you know the difference। ये actual fees mentioned है, but once you will apply the code IFA, my dear friends, once you will apply the code IFA which is written over here, you will get the minimum 10% discount। Now let's see what will be the fee structure after the discount। just see over here, 30,000 है, 38 है, 44 है, but after the discount it will become 27,225, 34,650 and 39,600 just after applying the code IFA। These are the discounted fees। These are the discounted fees। So never forget to use the code IFA whenever you are taking the सब्सक्रिप्शन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को मिसकंसेप्शन होता है कि भाई ये जो कोड है, यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है, ये सिर्फ गेट और ESE के लिए है, बाकी किसी में अप्लाई नहीं करना है। नो माय डियर फ्रेंड्स, this code which is written over here, AIEFA, this is applicable for any one of the courses which is available in Unacademy platform। Unacademy platform पे जितने भी courses हैं, either it is a UPSC, banking, CGL, okay, IIT JEE, NEET, SSC, JEE, GATE, ESE, whatever it is, CAT, JRE, whatever it is, for all of the subscriptions you can use the code IFA। So suppose if some of the friends are looking for the CAT, JRE, some of your relatives is looking for the IIT JEE and NEET, you can suggest all of them to use the code IFA and all of them will get minimum 10% discount। Are you getting my point or not, all of you? So this is all about the plus subscription। तो देखते हैं कि जो नया इनोवेटिव सब्सक्रिप्शन है, दैट इज द आइकनिक। व्हाट अबाउट इट? सो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन लुक अपॉन दिस प्लस सब्सक्रिप्शन में 1 month, 3 month और 6 month, इन सारे तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। लेकिन क्या ये आइकनिक में है? लेट्स सी अबाउट द आइकनिक। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गो फॉर द आइकनिक सब्सक्रिप्शन, आपको 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का सब्सक्रिप्शन है, जहां पर हम लोग बिलीव करते हैं वी विल गाइड यू इन सच अ वे यू कैन परफॉर्म बेटर इन कंपैरिजन टू द अदर स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर द 12 month and the 24 month। सपोज इफ यू आर पास आउट, if you are in a final year or you are a pass out candidate, देखिए पास आउट कैंडिडेट के लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, ठीक है ना। उनके फैमिली वालों से ज्यादा चिंता उनके बगल वालों की होती है कि भाई आपका लड़का क्या कर रहा है, पास आउट हो गया, जॉब नहीं लगा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आपको सबसे ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि आप एक पास आउट कैंडिडेट हैं, आपको जल्द से जल्द अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है। गॉट इट?
विदाउट वेस्टिंग एनी ईयर, क्योंकि ईयर ड्रॉप लाइफ का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है. तो इफ यू आर अ पास आउट और इन अ फाइनल ईयर, then definitely I will suggest you to go for the 12 month of subscriptions in a iconic, and in that situation your fee structure will be a 45,000. Still I haven't discussed anything what the extra features you are going to have in a iconic subscription. My dear friend, just wait, I will discuss about each and everything. आपको प्लस में क्या मिलने वाला है, आइकनिक में क्या मिलने वाला है, एंड हाउ द आइकनिक इज just different from the plus and why this is more useful. Got it? So if you are looking for the subscription of the 24 months, then your fee structure will be the 60,000. तो देखिए, अगर आप प्लस से कंपैरिजन करोगे तो यहां पर लगभग, ठीक है ना, 13-14,000 आपका फीस एक्स्ट्रा लग रहा है, और इसको कंपैरिजन करोगे तो लगभग आपका वही 14-15 हजार रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है. लेकिन आज ये एक्स्ट्रा पे करने पे अगर कल के डेट में मेरा करियर एक अच्छा हो रहा है तो क्या दिक्कत है. आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाओ, दिल्ली में 1 लाख से कम फीस नहीं लेते, प्लस आपके जो रहने के खर्चे हैं, खाने के खर्चे हैं, वो उसको डबल है. 1 साल का आप अपना पर्सनल एक्सपेंस जोड़ोगे तो लगभग 1.5 से 2 लाख है. जस्ट ट्राई टू थिंक इकोनॉमिकली. बहुत जरूरी है लाइफ में, कैलकुलेटेड लाइफ जीना बहुत ही जरूरी है. अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई अगर मैं एक्स सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, यहां से 5 क्वेश्चन आना है तो मुझे ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अगर वाई सब्जेक्ट है यहां से 7 क्वेश्चन आने हैं और 2 क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के हैं, तो ये 5 क्वेश्चन मेरे हाथ से कहीं नहीं जाना चाहिए. बाकी के 2 क्वेश्चन पे सबसे लास्ट में मैं मेहनत करूंगा. तो कैलकुलेशन बहुत ही जरूरी है लाइफ में इफ यू रियली वांट टू परफॉर्म. Either it is regarding your preparation, it is regarding your economy, everything the calculation is very much required. So my dear friends, if you are looking for the 12 month of subscription, means if you are in a final year or the pass out, just go for the 12 month of subscription. But if you are in a second year or third year then definitely I will suggest go for the 24 month of subscription, and in that situation your fees will be this. So again never forget to use the code iPhone. This is the promo code which you can apply while taking the subscription, and once you will apply this particular promo code you will get immediately 10% discount. You will immediately get 10% discount. Now let's see what is the difference between plus and iconic. So my dear friends, if you are looking for a plus subscription, then first thing you will get, or you will have a India's best educators. So best आपको हर केस में मिलेगा, चाहे वो प्लस हो या आइकनिक हो, क्योंकि यही हमारा सबसे बिगेस्ट, ठीक है ना, लाइक सबसे बिगेस्ट हमारा एक पावर पॉइंट है, ठीक है ना. So the second thing, you are going to have a interactive live classes. Third thing is the structured courses and PDF, and the fourth thing, you are going to have a live test and quizzes. So these are the things which you are getting in a plus subscription. Now let's see what the next thing you are going to have if you will take the iconic. So all the things that is available in a plus, definitely you will get in a iconic. But what the extra thing you are going to have? So the most important thing is the personal coach. You can select, suppose there are like 15 number of educators. There are 15 number of educators in computer science for the GATE. So out of 15, you can select anyone according to your satisfaction. And that educator will guide you time to time. What is your performance, where you need improvement. He will solve your doubts. He will guide you at every moment. Just choose your educator according to your own personal satisfaction. Are you getting my point or not? अब वो एडुकेटर आपको हर पाथ में, हर मोड़ पे आपको गाइड करेगी, तब तक जब तक कि आपका गेट का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है. इज दैट क्लियर? गेट के एग्जाम के बाद भी काउंसलिंग के लिए, सिलेक्शंस के लिए, हर जगह इंटरव्यू के लिए, हर जगह आपको गाइड करेगी. So you can select any one of the educator which is available in Unacademy platform,
as your personal coach. Got it? The second biggest or most important thing that you are going to have a study material. My dear friends, all the study material or the content in Unacademy platform has been developed by the educators who are associated. So आप समझ रहे होगे कि कंटेंट में भी कहीं कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला. बट व्हाट इज द अपार्ट फ्रॉम दिस, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस. जो भी आप टेस्ट अपेयर कर रहे हो उसका एक पर्सनल एनालिसिस कर कर करके आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आप और आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है. स्टडी प्लानर, आप जो भी स्टडी कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, उसका अगर प्लानिंग में कहीं से भी कोई कमी है तो वो आपको गाइड किया जाएगा अलग से, सेपरेटली. ओके, एंड दैट्स यू आर गोइंग टू हैव अ इन अ आइकनिक सब्सक्रिप्शन. दोस्तों ये कहीं नहीं मिलता है. आप दिल्ली में चले जाओ, क्लास खत्म होने के बाद एडुकेटर तुरंत भाग जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है. आप अगर पर्सनल एक क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप क्लास के अंदर ही पूछो, क्लास के बाद कुछ नहीं मिलने वाला. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके अंदर एक हलचल सी मची होती है जो यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला. गॉट इट? नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द subject. It's time to start the subjects. So I think you have like today you have enjoyed the introductory session about the Unacademy. और अगर आपकी सोच पक्की है तो आज के बाद आप ज्यादा नहीं सोचोगे. You will decide, you will take the subscription and you will start your journey. So let's crack it, my dear friends. This is the slogan of the Unacademy because we believe we will prepare you in a such a way that you would be able to crack your exam in a first attempt. So just let's start a subject. So today our concern of the subject is compiler design, and this is the crash course. This is the crash course on parsing. So my dear friends, I hope you have an idea what is the weightage of the compiler design. What is the weightage of the compiler design? Every year almost 2 to 3 questions were asked from this particular subject. और ये क्वेश्चंस आते कहां से हैं, ठीक है ना? क्योंकि देखिए जब तक आपको गोल पता नहीं होगा जर्नी आप नहीं स्टार्ट कर सकते. सो सी ओवर हियर, पूरे कंपाइलर डिजाइन में 2 ही चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? और यू कैन से 3 चैप्टर. वन इज द पार्सिंग, जहां से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चंस मिलेगा. सेकंड चैप्टर इज सिमेंटिक एनालिसिस, and the third one is intermediate code generation. आप लास्ट कुछ टाइम का क्वेश्चन उठा करके देख लो तो सिमेंटिक एनालिसिस से भी आपको 0 to 1 क्वेश्चन मिलेगा और यहां से 1 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, ठीक है ना? नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. और इस सब्जेक्ट में आप एक चीज ध्यान में रखना, जो क्वेश्चंस है 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, और जो मार्क्स है, अगर हम लोग मार्क्स वेटेज की बात करें तो मार्क्स वेटेज जो होता है लगभग 3 to 5 मार्क्स का होता है, ठीक है ना? 3 to 5 मार्क्स का होता है. एंड टुडे इन आवर सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्सिंग. तो चलिए देखते हैं कि पार्सिंग में पहले पढ़ना क्या है, ठीक है ना? पार्सिंग इज वन ऑफ द फेज ऑफ द कंपाइलर. And we basically implement 2 different kind of parsing method. One is the टॉप डाउन. हर एक चीज के मीनिंग को समझेंगे जहां पर हम लोग पढ़ते हैं LL1. ओके, एंड द सेकेंड वन इज द बॉटम अप, जहां पर हम लोग स्टडी करेंगे SLR, LR एंड LA. LR को हम लोग CLR भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो इधर यू कैन यूज द टर्म LR और यू कैन यूज द टर्म CLR.
not a problem at all. Are you getting my point or not? But before starting this subject, before starting this particular topic, you have to know about the first and follow set. First and follow set. Got it? Everyone, you have to know about the first and follow set. How to calculate the first and follow set, because these things will be applied while doing the parsing. चाहे वो टॉप डाउन पार्सिंग हो या बॉटम अप पार्सिंग हो, हर जगह फर्स्ट एंड फॉलो सेट का एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसके अलावा जो पार्सिंग होता है वो ग्रामर पे अप्लाई होता है. बेसिकली वी अप्लाई द पार्सिंग और वी डू द पार्सिंग ऑन ग्रामर. वी डू द पार्सिंग ऑन ग्रामर. वेलकम ज्योति, कैसी हो? We do the parsing on grammar, and I hope you have a little bit idea about the grammar which you have to study in a TOC, that is the theory of computation. So let's see some of the few things about the grammar, and then we will come to the parsing, and we will start first and follow set, and then we will come to the top down and bottom up parsing. तो सीक्वेंस हमारा क्या होगा? सबसे पहले ग्रामर के कुछ बेसिक चीज को हम लोग समझेंगे जो हमको पार्सिंग में अप्लाई करना है. Second thing, we will look upon the first and follow set, calculation of first and follow set, and then we will implement grammar and first and follow set in top down parsing, and then we will talk about the bottom up parsing. तो इस सीक्वेंस में पूरा का पूरा आज का मैराथन कोर्स में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं. तो थोड़ा सा धैर्य रखिए क्योंकि मजा आने वाला है. यहाँ पर हम लोग हर एक चीज को बहुत बेसिक से, बहुत बारीकी से डिस्कस करेंगे. वी विल लुक अपॉन सम ऑफ द थिंग्स. देखिए, हम यहाँ पर पूरा ग्रामर आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, लेकिन ग्रामर में जो भी पार्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो हम लोग यूज करने वाले हैं, उसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट फॉलो सेट, देन टॉप डाउन, देन बॉटम अप. ओके, फाइन, वेरी गुड ज्योति. सो आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है ना? Okay, see over here. See, whenever we are talking about the grammar, then grammar could be divided into two parts. One is the unambiguous grammar, and second one is the ambiguous grammar. Take an example. Suppose we are considering a grammar like this: E to E plus E. I hope you have a basic concept. E into E and slash ID. So definitely this is the ambiguous grammar. And I'm writing the unambiguous grammar corresponding to this ambiguous grammar. So this is the grammar G dash, which I'm writing like this, like E to E plus T slash T, and this is the T to T into F slash F, and this is the F to. So here both the grammar are equivalent, but this is the ambiguous and this is the unambiguous. Means the language, अगर हम लोग language की बात करें तो language generated by G dash is equal to language generated by G. Got it? So दोनों ही ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होंगे दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसी ग्रामर को मैंने क्या किया है, एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट किया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वी हैव जस्ट कन्वर्टेड द एम्बिगुअस ग्रामर इनटू अ अनएम्बिगुअस ग्रामर.
clear. But for the compiler point of view, for the compiler point of view, the ambiguous grammar is not useful. Okay, just write it over here. It is not applicable, or you can say useful for compiler design. This is not applicable or useful for compiler design. My question is why? My question is why? So generally, under the grammar, we basically deal with the unambiguous and ambiguous grammar. But basically, we use the ambiguous grammar and we do not use the unambiguous grammar. We basically use and we do not use the ambiguous grammar. But the question is why? Let's discuss a few things about this, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. So just let's see. See, if I am considering a grammar G is equal to E to E plus E and E into E and slash ID, and I am talking about a string. तो स्ट्रिंग को जनरली हम लोग टीओसी में कैसे रिप्रेजेंट करते थे? W से. सो W इज इक्वल टू ID प्लस ID into ID. So just generate it. Just generate. So in place of ID, you can consider like this: 2 plus 5 into 7. ठीक है ना? ID के जगह हमने ये इंटीजर वैल्यू ले लिया है. तो देखिए, ये जो स्ट्रिंग है ये दो तरीके से जनरेट हो सकता है. बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस ग्रामर? There exists more than one parse tree for a single string. Yes or no? The meaning of the ambiguous grammar is it is generating more than one parse tree for a same string. Then it is ambiguous. So let's see. अगर हम लोग इस स्ट्रिंग को जनरेट करें E2 E into E and then E plus E and then ID and ID. So this is the first parse tree. So from here you can generate the 2, from here you can generate the 5, and from here you can generate the 7. So ultimately what the string will be generated? So the string will be generated in this fashion: 2 plus 5 into 7. So it will be a 2 plus 5 into 7. So this is known as the parse tree, and that's why we say the parsing, because without constructing the parse tree you cannot make the parsing. Are you getting my point or not? पार्सिंग जो नाम है वो क्यों दिया गया? कंपाइलर का ये वन ऑफ द फेज है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्सिंग और सिंटैक्स एनालिसिस. बिकॉज टू मेक द पार्सिंग you have to make a parse tree. Without making a parse tree you cannot do the parsing. Are you getting my point or not? So just see what is the second parse tree. E2 E plus E and then E2 E into E and reduce all E to ID. Got it? So just see over here, this ID will be reduced by 2, this ID will be reduced by 5, and this ID will be reduced by 7. So finally the string will look like this: 2 plus 5 into 7. Yes or no? But what is the result you are achieving from the both parse tree? यहां पर हमारे पास दो अलग अलग parse tree है. For the same string,
for the same string this, we have a two parse tree. Are you getting my point or not? So just see, अब इस पांच ट्री को अगर हम लोग एनालाइज करें तो जब तक लीफ वाला पार्ट इवेलुएट नहीं होगा तब तक ये वाला पार्ट इवेलुएट नहीं होगा, तो लीफ वाले पार्ट से क्या आ रहा है 2 + 5. So here it will become 2 + 5 that is equal to 7. और यहां पर क्या कैलकुलेट होगा, दिस इज द 7, so here the value will be 7. So here it will be a 7 into 7 is equal to 49. Yes or no? This one will become the 49. So here from this past tree we are getting the result 49. Okay, now let's see what we are achieving from this particular past tree. This is the 5 into 7. So here the value will become the 5 into 7, that is equal to 45. Yes or no? And here what you will achieve, 2 plus this 45. So here you are achieving the value 37. So from both the past tree you are getting the two different value. And my dear friends, you know the mathematics. Mathematically, what will be the value of this? 37, which is the correct value. Which is the correct value. So, whatever the value you are achieving from this particular past tree is just a wrong value and this is the correct value. Got it? So, do we want such kind of grammar which will generate two different value on the different compilation? भाई अगर एक से ज्यादा पास्ट ट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो एक पास्ट, अगर सपोज कंपाइलर ने ये वाला पास्ट ट्री जनरेट किया तो कंपाइलर आपको आंसर क्या देगा 49. इफ द कंपाइलर जनरेटेड दिस पास्ट ट्री द कंपाइलर विल गिव यू द आंसर 37. सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, देयर इज अ एम्बिग्यूटी इन द आउटपुट. There is the ambiguity in the output and we don't want such kind of compiler. भाई आप एक ऐसा कंपाइलर डिजाइन कर रहे हो जहां पर कभी रिजल्ट, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट कभी 49 आ रहा है तो कभी 47 आ रहा है. So we are getting the ambiguity in result. So what you have to note it down over here, with ambiguous grammar, we get, or you can say achieve, we get ambiguity in result. So we need a grammar which can produce unique result, Are you getting my point or not? So how you can achieve the unique result? With the help of unambiguous grammar. क्योंकि unambiguous grammar एक ऐसा ग्रामर होता है जहां से सिर्फ एक ही पास्ट ट्री जनरेट होगा. So let's see about the unambiguous grammar. तो ये हम लोगों ने इसके ऊपर एनालिसिस किया. Now let's talk about the unambiguous grammar. तो सेकंड ग्रामर हमारा क्या था, GTAS. और GTAS में क्या गिवन था, E2 E plus T slash T and T2 T into F slash F and F to ID, and we need to generate the string 2 plus 5 into 7. So this is the string which we want to generate, and we know this is the unambiguous grammar. This is the unambiguous grammar. So my dear friends, unambiguous grammar means it will always produce a unique parse tree.
it will always produce a unique parse tree. Unique parse tree. If the parse tree is unique, then it will produce the unique result. It will produce a unique result. Are you getting my point or not? So just see over here. Just see over here. चलिए इस स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं. तो दिया हुआ है e2 e प्लस t, ठीक है ना. और इस e को t से, t को f से और f को मैंने id से रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना. id से रिड्यूस कर दिया. नाउ द t कैन बी रिड्यूस बाय दिस. भाई हमने प्लस को जनरेट कर दिया. देखिए तरीका क्या होता है, बाद में मैं इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा. तरीका क्या होता है कि सबसे पहले मुझे प्लस जनरेट करना था, तो वी हैव जनरेटेड द प्लस सिंबल. वी हैव जस्ट जनरेटेड द प्लस सिंबल ओवर हियर. तो अब इसके बाद मल्टीप्लाई वाला सिंबल जनरेट करना है. तो सबसे पहले हमने प्लस को जनरेट किया, सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई वाले सिंबल को जनरेट करेंगे. सो द t विल बी रिड्यूस बाय t into f, and t will be reduced by f, and f will be reduced by id, and this f will be reduced by id. So what we are achieving from here, this id will be reduced by 2, this one is the 5 and this one is the 7. क्या इसके अलावा कोई पास ट्री पॉसिबल है? नहीं. So finally what string we are getting from here, 2 plus 5 into 7. We are getting the string 2 plus 5 into 7. Now what result we are getting in the root? See over here. तो भाई यहां पर t का वैल्यू कितना है? 5 है. यहां पर f का वैल्यू कितना है? 7 है. भाई इस id का वैल्यू f पे जाएगा, f का वैल्यू इस id का वैल्यू f पे जाएगा, f का वैल्यू t पे जाएगा. सो इट इज अ 5. इस id का वैल्यू f पे गया, दिस इज द 7. नाउ इट विल बिकम 5 into 7 is equal to 35. Now ये जो वैल्यू है f पे जाएगा, f का वैल्यू t पे जाएगा, t का वैल्यू e पे आएगा. तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा? 2. So it will become 2 plus 35. So this one will become 37. So finally we are getting the result 37 at the root level, which is the unique result and correct. ये यूनिक भी है और करेक्ट भी है. गॉट इट. ये यूनिक भी है और करेक्ट भी है. एंड दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट द ambiguous grammar is not applicable or useful for compiler design. तो कंपाइलर डिजाइन के लिए जो हमारा प्रिफरेबल ग्रामर होगा, माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड्स यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर द unambiguous grammar. You have to always consider the unambiguous grammar. Means if you want to do the parsing, looking upon the grammar, you can easily say whether we can start the parsing or not. भाई पार्सिंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो टॉप डाउन से सॉल्व हो जाए, हो सकता है वो बॉटम अप से सॉल्व हो जाए. लेकिन अगर ग्रामर एम्बिग्यूअस है तो वो ना ही टॉप डाउन अप्रोच से सॉल्व होगा, ना ही बॉटम अप अप्रोच से सॉल्व होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो प्लीज नोट इट डाउन. सी ओवर हियर. सी if grammar is ambiguous, then neither it can be solved by top down approach, that is nothing but LL1
और बॉटम ऑफ अप्रोच, और बॉटम ऑफ अप्रोच, that is the SLR, LR or LA, LR. So looking upon the grammar, you can confirm it. You can confirm it that if the grammar is ambiguous, you cannot apply the top down or the bottom of approach. So all these method is always applicable in unambiguous grammar. Unambiguous. So this is all about the grammar. देखिए ग्रामर में बहुत सारा चीज पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत सारा चीज पढ़ना है, लेकिन उन सारे चीजों को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन एक और चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है, नोट दे कर करके। देखिए जो पार्सिंग होता है वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे ही अप्लाई होता है, ठीक है ना। वी डू parsing only for context free grammar, context free grammar, ठीक है ना। बिकॉज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव रियल लाइफ एप्लीकेशन में हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं और गेट में भी नहीं पूछा जाता है, समझना बात को। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव जो ग्रामर है वो रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी आज के डेट में यूज नहीं हो रहा है और ना ही ये हमारे गेट के सिलेबस में है। सो व्हेनेवर वी आर डूइंग द पार्सिंग, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पार्सिंग, सो ऑलवेज रिमेंबर द ग्रामर दैट यू हैव टू चूज शुड बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, नॉट बियॉन्ड दैट, not beyond that. Got it everyone? Now my dear friends, मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द ग्रामर जो कि बेसिक है। आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि ग्रामर दो टाइप के होते हैं, एम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस। कौन सा ग्रामर यूजफुल है कंपाइलर डिजाइन के लिए, ये हमारा बेसिक था, जहां पर मैंने आपको रीजन भी बताया कि व्हाई द अनएम्बिग्यूअस ग्रामर इज नॉट यूजफुल। अब हमारा जो नेक्स्ट फेज है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें पार्सिंग करना है, अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट द पार्सिंग। सो द नेक्स्ट फेज इज हाउ टू फाइंड आउट द फर्स्ट एंड फॉलो सेट, फर्स्ट एंड फॉलो सेट। सो लेट्स सी द कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो सेट। तो मैंने आज के इस लेक्चर्स में चार अलग अलग न्यूमेरिकल रखा है फर्स्ट एंड फॉलो सेट से रिलेटेड। सबसे पहले आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है। इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव देन डेफिनेटली आई विल टीच यू, डोंट वरी। मैं आपको हर एक बात बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट या फॉलो सेट इसी तरह से कैलकुलेशन क्यों होता है। एंड व्हेनेवर आई विल स्टार्ट द टॉप डाउन पार्सिंग, आई विल टेल यू व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो सेट। देखिए हर चीज के पीछे रीजन होता है, ठीक है ना। कोई आदमी अगर गड्ढा खोद रहा है तो उसको जमीन से पानी निकालना है या तो उसको कोयला निकालना है। लाइफ में हर चीज का रीजन होता है, तो रीजन भी जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड फॉलो सेट सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैसे फाइंड आउट करना है। देन आई विल टेल यू व्हाट इज द नीड ऑफ फाइंडिंग द फर्स्ट एंड फॉलो सेट। सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव गिवन यू टू डिफरेंट प्रॉब्लम and you have to find out the first and follow set for both the problem. For both the problem you have to calculate the first and follow set. So I am giving you a time of 1 minute, ठीक है ना। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं और आप मुझे बताओ। जस्ट पुट द आंसर इन अ कमेंट बॉक्स, जस्ट पुट द आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। I have considered the two different grammar, question 1 and 2, and you have to find out the first and follow set. You know about the grammar. Grammar में दो ही चीज होता है,
ठीक है ना, टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। टर्मिनल्स का मतलब होता है दिस इज द एक्चुअल इनपुट सप्लाइड, और नॉन टर्मिनल्स का मतलब होता है सपोर्टिंग पार्ट विच इज यूज्ड टू जनरेट द स्ट्रिंग। सो एनी आंसर? नॉन टर्मिनल हमेशा सपोर्ट करता है किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए, और टर्मिनल एक्चुअल स्ट्रिंग्स का सिंबल होता है। ठीक है, फाइन। एनीवन एल्स? सी माय डियर फ्रेंड्स, द ग्रामर consists of two things। एक्चुअली तीन चीज है, एक तो प्रोडक्शन रूल भी है, ठीक है ना। पहला होता है टर्मिनल्स, दूसरा होता है नॉन टर्मिनल, ठीक है ना। टर्मिनल जो होते हैं ये हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल, और ये हमारा इनपुट सिंबल होता है। दिस इज द इनपुट सिंबल, ठीक है ना, इनपुट सिंबल, ठीक है ना। इनपुट सिंबल मीन जो कि स्ट्रिंग कैरी करता है। नॉन टर्मिनल जो बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। ये हमारा होता है सपोर्टिंग symbol used to generate strings। Got it? So what we have observed, grammar consists of two things, terminal and non-terminal। जो नॉन टर्मिनल होते हैं ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, लाइक ई टी एफ, these are the non-terminal। It is used to, it is a supporting symbol used to generate the string with the help of production rule। ठीक है ना, ये स्ट्रिंग अपने आप जनरेट नहीं करेगा, ये करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन रूल। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल एंड then we will look upon the next example। Fine, just see over here। पहले वाले एग्जाम्पल का फर्स्ट एंड फॉलो सेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। लेट्स सी द फर्स्ट एंड फॉलो सेट ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल। सी ओवर हियर, सी ओवर हियर। चलिए, ये हमारा प्रोडक्शन रूल गिवन है, ठीक है ना, और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ आई से, ठीक है ना। सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड इज द फॉलो दैट वी विल रिप्रेजेंट बाय एफ ऑफ जीरो। देखिए यहां पर लिखने का मीनिंग क्या है, दोनों का मैंने दूसरा सिंबल लिया है। तो फर्स्ट मीन्स एफ ऑफ आई, फॉलो मीन्स एफ ऑफ जीरो। एंड द फर्स्ट थिंग इज, ये दोनों ही सेट जो होते हैं इट इज अ सेट ऑफ टर्मिनल्स। फर्स्ट एंड फॉलो सेट इज जस्ट अ सेट ऑफ टर्मिनल्स। फर्स्ट एंड फॉलो सेट contains terminal। This is the first thing, terminals। okay, second point is, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि फॉलो सेट नेवर कंटेन द एप्सिलॉन। ठीक है ना, ऑफ कोर्स एप्सिलॉन भी टर्मिनल का एक पार्ट है, लाइक दिस इज द एप्सिलॉन, दिस इज द एप्सिलॉन।
So the follow set never contain the epsilon. Why? I will tell you. Follow set never contain epsilon. मस्ट बी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर वाई. कीप पेशेंस, आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. देखिए लाइफ में पेशेंस का होना बहुत ही जरूरी है. पेशेंस का होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप कुछ सीख पाओगे. अगर आपके अंदर जल्दबाजी है कि मुझे बस अभी तुरंत सब चीज सीखना है, आप नहीं सीख पाओगे. नाउ लेट्स सी. देखिए, और मैं बाद में ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट एंड फॉलो सेट, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट एंड फॉलो सेट एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस इन पार्सिंग. व्हाट इज द नीड ऑफ दिस इन पार्सिंग. सो सबसे हम लोग पहले फर्स्ट सेट कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल थिंक अबाउट द फॉलो सेट. जो सी हो गई है फर्स्ट. तो देखिए फर्स्ट और फॉलो सेट जो है ये हमेशा नॉन टर्मिनल का कैलकुलेट होता है. सो जस्ट राइट इट ओवर हियर. It is calculated for all non-terminals. All non-terminals. Got it? तो जितने भी नॉन टर्मिनल्स अवेलेबल है ग्रामर में, उन सभी का फर्स्ट एंड फॉलो सेट कैलकुलेट करेंगे. तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ई. ठीक है ना. सी, लुकिंग अपॉन द ग्रामर यू कैन एनालाइज, दिस इज द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर. So we are trying to calculate the first of E. So my dear friends, what will be the first of E? Just see over here. ग्रामर क्या गिवन है, देखिए इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को समझ जाते हैं, या आपके 1000 क्वेश्चंस का आंसर दे देगा. ठीक है ना. तो समझिए. सी, फर्स्ट का मतलब होता है ई से डिराइव होने वाला डायरेक्ट टर्मिनल. ई से डिराइव होने वाला डायरेक्ट टर्मिनल. सो यहां से ई से डिराइव होने वाला सिंबल कौन सा है? टी, विच इज नॉन टर्मिनल. दिस इज नॉट अ टर्मिनल बट दिस इज द नॉन टर्मिनल. तो भाई नॉन टर्मिनल तो यहां पर लिख नहीं सकते हैं, बिकॉज द फर्स्ट एंड फॉलो सेट कंटेन द टर्मिनल्स ओनली. सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिड्यूस द नॉन टर्मिनल टी. सो वेन एवर यू विल रिड्यूस द नॉन टर्मिनल टी, तो टी किससे रिड्यूस हो सकता है? एफ टी से. So what we will write? We will write the FTS. E जो है, T जो है किससे रिड्यूस हो रहा है? FT डैश. सॉरी, दिस इज द नॉट T, दिस इज द T डैश. ओके. नाउ अब इस सिचुएशन में E का फर्स्ट कौन है भाई? द फर्स्ट ऑफ E इज F. अगेन F इज अ नॉन टर्मिनल. तो नॉन टर्मिनल तो कभी भी फर्स्ट सेट में नहीं आ सकता. तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्दर वी हैव टू रिड्यूस द एफ. सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर द एफ कैन बी रिड्यूस बाय टू डिफरेंट पार्ट. एफ को या तो हम लोग इससे रिड्यूस कर सकते हैं, या तो इससे रिड्यूस कर सकते हैं. समझना बात को. तो एफ को हम लोग दो तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. एफ को हम लोग दो तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं. तो देखिए, एफ को अगर फर्स्ट वाले प्रोडक्शन से रिड्यूस करते हैं, तो ये क्या आएगा? एफ ई टू ई टी डैश ई डैश. या एफ को हम लोग आईडी से रिड्यूस कर सकते हैं. तो व्हाट वी विल राइट? ई टू आईडी टी डैश एंड ई डैश. सो इन दिस सिचुएशन द फर्स्ट ऑफ ई विल बिकम द आईडी, and in this situation the first of E will become the left bracket. Are you getting my point or not? So it will become ID and left bracket. So this is the first reduction, this is the second reduction. Got it? So अगर इस पूरे ग्रामर में हम लोग सेट ऑफ टर्मिनल्स की बात करें, सेट ऑफ टर्मिनल्स, ठीक है ना.
सेट ऑफ टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स हमारे पास क्या क्या है, एक तो आईडी है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, लेफ्ट ब्रैकेट है एंड राइट ब्रैकेट है। देखिए एप्सिलॉन कभी भी हम लोग टर्मिनल्स के फॉर्म में कंसीडर नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज द टर्मिनल्स बट वी नेवर कंसीडर इन अ सेट ऑफ टर्मिनल्स। गॉट इट। सो अल्टीमेटली इस पूरे प्रोडक्शन में हमारे पास टर्मिनल्स क्या क्या है, आईडी प्लस मल्टीप्लाई लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट। गॉट इट। एंड नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द फर्स्ट ऑफ ई। Similarly, find out the first of next terminal which is the E dash। तो देखिए E dash से डिराइव होने वाला टर्मिनल्स कौन है, प्लस एंड एप्सिलॉन। ठीक है ना, तो डायरेक्टली यहां पर आप क्या लिख सकते हो, इट इज अ प्लस एंड एप्सिलॉन। ओके, सिमिलरली just find out the first of t। so my dear friends, t का फर्स्ट कौन है, f, और f से क्या डिराइव हो रहा है, या तो लेफ्ट ब्रैकेट या तो आईडी। तो फर्स्ट ऑफ t you can write this is the first of f। yes or no भाई, t का जो फर्स्ट होगा वही f का फर्स्ट होगा। मीन्स जो t का फर्स्ट है वो f के फर्स्ट के बराबर है, और f का फर्स्ट हमारा क्या आ रहा है, फ्रॉम द f इधर वी कैन डिराइव द लेफ्ट ब्रैकेट और id। सो यू विल राइट लेफ्ट ब्रैकेट एंड similarly find out the first of t dash। t तो फाइंड आउट कर लिए, अब t dash के बारे में सोचते हैं। तो सी ओवर हियर, टी डैश का फर्स्ट क्या है, एक तो मल्टीप्लाई है, दूसरा एप्सिलॉन है। सो इट विल बिकम मल्टीप्लाई एंड एप्सिलॉन। एंड फाइनली वी नीड टू फाइंड आउट द फर्स्ट ऑफ एफ। तो भाई एफ से डिराइव होने वाला फर्स्ट कौन है, एक तो लेफ्ट ब्रैकेट है, दूसरा आईडी है। ठीक, दिस इज द लेफ्ट ब्रैकेट एंड so since there are 5 number of non-terminal in our actual grammar and for all of them we have find out the first. Now let's see how to calculate the follow set. I'm just bringing it in my next slide. Okay, in my next slide, ताकि बहुत ज्यादा कटिंग ना हो और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओ। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ पाओ। चलिए देखते हैं। See, now we have to find out the follow of। So my dear friends, since E is the start symbol of the grammar, E जो है वो ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है, तो जस्ट नोट इट डाउन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है। सी, फॉलो ऑफ start symbol is always dollar by default। Got it। तो स्टार्ट सिंबल का फॉलो जो होता है वो हमको बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, हमें डॉलर लेना है। But here also the question is why। I will discuss about each and everything, just don't worry, please follow my instructions। ठीक है ना, तब आप फॉलो सेट को गेन कर पाओगे। तो बाय डिफॉल्ट ई का फॉलो सेट हम लोग क्या ले लेंगे, डॉलर। देखिए नाम से ही बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, तो किसी भी सिंबल का फॉलो सेलेक्ट करना है। मींस अगर मैंने यहां पर लिखा है इस तरह से, दो पर्सन है, समझना बात को, दिस इज द पर्सन 1 एंड दिस इज द पर्सन 2। तो पर्सन 1 को फॉलो कौन कर रहा है, पर्सन 2। तो फॉलो ऑफ पर्सन 1 क्या हो जाएगा, पर्सन 2। यस और नो,
लेकिन अगर पर्सन टू का फॉलो हम लोग देखें तो इट इज जस्ट एम्प्टी, इट इज जस्ट एम्प्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पर्सन को कौन फॉलो कर रहा है। सिमिलरली यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि किसी भी सिंबल को फॉलो कौन कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर? कि लेफ्ट साइड में, ग्रामर के लेफ्ट साइड में नॉन टर्मिनल्स होंगे एंड इट कैन डिराइव एनीथिंग, it can derive anything. So what is the format of context free grammar? I hope you know. अगर हम लोग context free grammar की बात कर रहे हैं तो context free grammar का फॉर्मेट क्या होता है? variable to anything. अगर आपने मेरा TOC का लेक्चर अटेंड किया होगा, I hope you know about this. variable to anything means non-terminal to anything. That is the non-terminal plus terminal का full start. So just write it over here, write it over here, n2 is where n is equal to non-terminal and t is equal to terminals, where n is equal to non-terminals, or you can say set of non-terminals, and t is equal to set of terminals, set of terminals. But here this part means the left hand side will contain one non-terminal. Of course it is a set, but the left hand side will contain only one non-terminal. राइट हैंड साइड का जो नॉन टर्मिनल है वो कुछ भी कर सकता है, लाइक ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन कंसिडर, बट द लेफ्ट हैंड साइड विल कंटेन ओनली वन नॉन टर्मिनल. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहां पर सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल है और इसका फॉलो हम लोग अगर देखें तो अगर कुछ भी नहीं है तो यू कैन थिंक अबाउट द एप्सिलॉन. यस और नो? यू कैन थिंक अबाउट द एप्सिलॉन. सो अगर इस ग्रामर को देखें तो इस ग्रामर में ई के राइट में कुछ नहीं है तो ई का फॉलो कौन हो जाएगा? एप्सिलॉन. ई डैश का भी कौन हो जाएगा? एप्सिलॉन. इसका भी कौन हो जाएगा? एप्सिलॉन. एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन means every non-terminal will have a follow set of epsilon, and that's why I have noted down over here. Please try to understand. मैंने यहां पर आपको पॉइंट क्या दिखाया था? The follow set never contain epsilon. क्योंकि अगर हम लोग एप्सिलॉन की बात करें तो हर एक नॉन टर्मिनल का फॉलो एप्सिलॉन हो सकता है, बिकॉज इट इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. तो भाई इस तरह से तो सभी का एप्सिलॉन हो जाएगा, और यही रीजन है कि हम लोग एप्सिलॉन फॉलो सेट में रखते ही नहीं है. वी नेवर कंटेन द एप्सिलॉन इन अ फॉलो सेट, क्योंकि ऐसे तो भाई सभी का एप्सिलॉन हो जाना है. गॉट इट? So what we do to find out the follow set, we always look upon on the right hand side of the production rule. So just remember the second point. भाई लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग किसी भी नॉन टर्मिनल का फॉलो देखें तो हमेशा एप्सिलॉन आ रहा है, तो एप्सिलॉन तो हो नहीं सकता. तो वी हैव टू लुक अपॉन द राइट हैंड साइड. सी, to find follow set of non-terminal, I will intimate you, Jyoti. To find follow set of non-terminal, we always look upon right hand side
right hand side of production rule, all of production. गॉट इट। तो अगर कभी भी आज के बाद अगर आपको फॉलो सेट फाइंड आउट करना है तो आपको सिर्फ प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पे देखना पड़ेगा और वहीं से आप एग्जैक्ट फॉलो सेट फाइंड आउट कर सकते हो। डोंट लुक अपॉन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक ही नॉन टर्मिनल्स होंगे, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि नॉन टर्मिनल्स का फॉलो एप्सिलॉन हो नहीं सकता है, तो यू आर नॉट एबल टू डिराइव एनी कंक्लूजन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सो लुक अपॉन द राइट हैंड साइड। सो सी ओवर हियर, अभी हम लोग फॉलो सेट किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, ई का। तो आपको देखना पड़ेगा कि ई कहां पर है राइट हैंड साइड पे। तो देखिए यहां पर ई है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सो ई यहां पर है और ई को फॉलो कौन कर रहा है भाई, राइट ब्रैकेट, विच इज फॉलोइंग द ई, द राइट ब्रैकेट, और कहीं पर ई नहीं है, सो स्टॉप ओवर हियर। सो फाइनली द फॉलो सेट ऑफ ई will become dollar and right bracket. Similarly, find out the follow set of next symbol, which is nothing but a e dash. तो चलिए ई डैश से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्शन है देखते हैं। एक प्रोडक्शन दिया हुआ है ई टू ई डैश, दूसरा प्रोडक्शन गिवन है ई डैश टू प्लस टी ई डैश। तो ई डैश से रिलेटेड हमारे पास दो अलग अलग प्रोडक्शन अवेलेबल है, जहां पर राइट हैंड साइड पे ई डैश अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द फॉलो ऑफ ई डैश। भाई अगर आप डायरेक्टली देखो तो ई डैश को फॉलो कौन कर रहा है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन तो हो नहीं सकता। we know we know the epsilon can never be a follow set of any non-terminals. So what we will do in this situation, please try to understand what we will do in this particular situation. So अगर कभी भी ऐसा होता है कि किसी के राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसीडर द फॉलो ऑफ ई डैश इक्विवेलेंट टू द फॉलो ऑफ दिस। तो जिससे भी ये डिराइव हो रहा है, ये किससे डिराइव हो रहा है, ई से डिराइव हो रहा है, तो यहां पर फॉलो ऑफ ई डैश इज इक्विवेलेंट टू द फॉलो ऑफ ई। सिमिलरली द फॉलो ऑफ ई डैश इज इक्विवेलेंट टू द फॉलो ऑफ ई डैश। सो फ्रॉम दिस साइड यहां से क्या पता चल रहा है कि फॉलो ऑफ ई डैश इज इक्विवेलेंट टू द फॉलो ऑफ ई। भाई यहां से कंक्लूजन क्या आ रहा है, फॉलो ऑफ ई डैश इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ई। यहां से कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है कि फॉलो ऑफ ई डैश इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ई डैश। दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। भाई यहां से कोई कंक्लूजन ड्रॉ होगा क्या, नहीं। यहां पर क्या है, नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन कैन derive, can derive. Got it. We cannot derive any conclusion from here, so finally the follow of E dash will become the follow of E. And what is the follow of E? Dollar and right bracket. So finally the follow of E dash will become dollar and right bracket. But still my question is here, why? क्यों हम लोगों ने ई डैश का जो फॉलो है वो ई के फॉलो के बराबर ले लिया है? भाई ये तो क्वेश्चन उठता होगा ना। आप किसी भी बुक को रीड करोगे या कहीं पर भी देखोगे ये मेंशन किया हुआ है कि भाई ई डैश का जो फॉलो होगा ई के बराबर होगा, लेकिन किसी ने ये मेंशन नहीं किया है कि क्यों होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी व्हाई द फॉलो ऑफ ई डैश इज इक्विवेलेंट टू द फॉलो ऑफ ई। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। See over here. So just I am taking the same example into the next slide so that you can have a feel.
You can have a feel about this. चलिए देखते हैं, चलिए इस बात को समझिए। देखिए नॉन टर्मिनल ई से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, वी कैन डिराइव द टी ई डैश। नाउ द नॉन टर्मिनल टी कैन बी रिड्यूस इनटू द एफ टी डैश, और ये वाला ई डैश तो रहेगा ही। नाउ नॉन टर्मिनल एफ कैन बी रिड्यूस इट बाय, can be reduced by slash e t dash e dash. So finally you can write the production in this form. Now just reduce the e here, just reduce the e. So the e can be reduced by t e dash. So what you can write, e to t e dash again t dash e dash. So my dear friends, try to analyze the things. यहां पर e का फॉलो कौन था, राइट ब्रैकेट था, दैट इज अंडरस्टूड। अब मैंने e को रिड्यूस कर दिया है टी ई डैश से। किससे रिड्यूस कर दिया है, टी ई डैश से, क्योंकि इस तरह का प्रोडक्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो यहां पर ई डैश का भी फॉलो कौन हो गया है, दिस। सो वंस यू विल डू the subsequent reduction, once you will do the subsequent reduction, you will be able to know that the follow of e dash is nothing but the follow of e. यहां पर e का जो फॉलो था वही e dash का फॉलो बन गया। Are you getting my point or not? So concluding both this result, you can easily analyze the follow of e dash is equal to follow of. So if there exists any production from where the e can be reduced by this kind of production, in that situation the follow of e dash will become the follow of e. So this is the proof, this is the proof. Got it everyone? So I think इसके बाद आपके लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। नाउ लेट्स सी, अभी बहुत कुछ कैलकुलेट करना बाकी है। नेक्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द फॉलो ऑफ ई डैश तो हो गया है, अब हम लोग टी के बारे में सोचेंगे। सी ओवर हियर, टी का फॉलो। तो भाई यहां पर टी को फॉलो कौन कर रहा है, ई डैश कर रहा है, जस्ट सी ओवर हियर। देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी ई टू टी ई डैश। सी ओवर हियर क्या मैंने लिखा है, नाउ द ई डैश कैन बी रिड्यूस बाय द प्रोडक्शन रूल प्लस टी ई डैश, और इट कैन बी रिड्यूस बाय द प्रोडक्शन रूल एप्सिलॉन। सो अगर हम लोगों ने इससे रिड्यूस किया तो ये तो टी तो रहेगा ही, ठीक है ना, और फाइनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ई टू दिस, और अगर हमने एप्सिलॉन से रिड्यूस किया तो फाइनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ई टू टी। भाई ये पूरा का पूरा ई डैश जो है अगर एप्सिलॉन से रिड्यूस हो जाता है तो इट विल बिकम ई टू टी, और अगर ये ई इससे रिड्यूस होता है तो ये हो जाएगा ई टू टी प्लस दिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर what is the follow of t, this is the plus, and here what is the follow of t, this is the equivalent to the follow of e. यहां पर t का फॉलो कौन हो जाएगा, फॉलो ऑफ e. So finally the follow of t will become plus union follow of e. So what we can write over here, this is the plus n follow of e, that is the $n right bracket, that is the $n right bracket. Got it everyone?
Jyoti, you can follow the book Peter Lynch. Peter Lynch. The spelling is Lintj. ओके सी सो यहां पर देखो कि भाई फॉलो ऑफ टी, यहां पर ईडेस आ रहा है, तो भाई ईडेस का जो फर्स्ट होगा, यहां पर ईडेस का फर्स्ट कौन है, प्लस एन एप्सिलॉन, तो जो ईडेस का फर्स्ट होगा वही टी का फॉलो हो जाएगा, यस और नो। ईडेस का जो फर्स्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ईडेस का जो फर्स्ट होगा वही टी का फॉलो हो जाएगा, तो ईडेस का फर्स्ट कौन है, प्लस है, तो टी का फॉलो भी प्लस हो जाएगा। ईडेस का फर्स्ट कौन है, एप्सिलॉन है, तो भाई अगर इसको मैंने एप्सिलॉन से रिड्यूस किया तो फाइनली क्या हो जाएगा, टी का फॉलो ई के फॉलो के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इन दिस मैनर, देखिए ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इन दिस मैनर यू कैन इजिली थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा ना, आप इन सब चीजों के बारे में समझते चले जाओगे। फॉलो ऑफ टी डैश, तो भाई देखो टी डैश कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो यहां पर आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है, तो यहां पर टी डैश का फॉलो टी के फॉलो के बराबर है, ठीक है ना, और यहां पर टी डैश का फॉलो टी डैश के फॉलो के बराबर है, तो यहां से कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। तो फाइनली टी डैश का फॉलो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, it is the follow of t, so first of all write it is equivalent to follow of t, it is equivalent to follow of t, so ultimately it will become plus dollar and similarly let's try to find out the follow of f। तो देखिए यहां पर f का फॉलो कौन हो जाएगा, t का फर्स्ट, और t का फर्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लाई एन एप्सिलॉन, तो एक तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और अगर मैंने टी डैश को एप्सिलॉन से रिड्यूस किया तो एफ का फॉलो कौन हो जाएगा, टी। सो माय डियर फ्रेंड्स व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, दैट फॉलो ऑफ एफ इज इक्वल टू, एक तो मल्टीप्लाई हो गया यूनियन फॉलो ऑफ t, because see over here by t can be reduced by f t dash and this t dash can be reduced by two different way। तो देखिए अगर t dash को मैंने इससे रिड्यूस कर दिया मल्टीप्लाई एफ टी डैश से, तो ये क्या हो जाएगा, f मल्टीप्लाई एफ टी डैश, और अगर टी डैश को मैंने एप्सिलॉन से रिड्यूस कर दिया, यहां पर क्या हो रहा है, टी डैश इज रिड्यूसिंग बाय मल्टीप्लाई एफ टी डैश, एंड हियर वी आर रिड्यूसिंग द टी डैश टू एप्सिलॉन, तो यहां पर क्या हो जाएगा t2। सो जस्ट सी ओवर हियर, यहां पर f का फॉलो कौन है, मल्टीप्लाई है, और यहां पर f का फॉलो कौन है, दिस है, ये दो अलग अलग प्रोडक्शन है टी डैश के करस्पॉन्डिंग, सो दो अलग अलग टाइप के फॉलो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई फॉलो ऑफ टी, सो दिस वन विल बिकम multiply what is the follow of t plus dollar n, so this one will become the final, so this is the way to find out the first and follow set। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, so that you would be able to solve all the subsequent numerical। so let's see the another numerical। see dear my friends, अब ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है और इसको आपको सॉल्व करना है, सो क्विक, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, समझना बात को, आई एम जस्ट गिविंग यू अ टाइम ऑफ 1 मिनट, एंड विद इन 1 मिनट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, सो आई एम वेटिंग फॉर द टाइम, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, जस्ट टेल मी द आंसर all of you।
देखिए कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है सीखना, क्योंकि बिना उसको सीखे आप कुछ कर नहीं सकते। अब यहां पर मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। whenever I am trying to solve these questions, I will give you the only logic which I have used in the previous session. ठीक है ना? चलिए, those who are online can respond me. Any answer guys? बोलो भाई, all of you. Any answer? See over here. See over here. देखिए फर्स्ट कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ एस कैलकुलेट कर रहे हैं, समझना बात को, इफ वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ एस, सो माय डियर फ्रेंड्स, विच इज द फर्स्ट ऑफ एस? ओनली ए, only a. Similarly, this is the first. Okay, similarly we are trying to calculate the first of b, so this one will become, this one will become only c. यहां पर भाई b का फर्स्ट कौन है? स्मॉल c. Similarly, just try to calculate the first of c. So what is the first of c? This one will become the small b and epsilon. Small b and epsilon. Similarly, calculate the first of d. Here it is interesting. देखिए d का फर्स्ट कौन है? e है। समझना बात को, d का फर्स्ट, d से हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं? e एंड f. तो फर्दर e कैन बी रिड्यूस बाय g और इट कैन बी रिड्यूस बाय एप्सिलॉन। तो अगर मैंने e को g से रिड्यूस कर दिया तो फाइनली d का फर्स्ट कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, this one is the g. But whenever I have reduced the e by epsilon, then the production will look like this, d to f, or again the f can be reduced by two different way. Whether it can be reduced by small f और इट कैन बी रिड्यूस बाय द एप्सिलॉन। तो अगर मैंने f को स्मॉल f से रिड्यूस किया तो इट विल बिकम f, और अगर एप्सिलॉन से रिड्यूस किया तो इट विल बिकम द एप्सिलॉन। गॉट इट एवरीवन? So finally the first of d will become g, f and epsilon. Similarly, just think about the first of, तो e का फर्स्ट कौन है? या तो g या तो epsilon, g और epsilon. Similarly the first of f, तो ये तो या तो f है या तो epsilon. सो फर्स्ट कैलकुलेट करना बहुत ही चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग या मजा उसमें है जिसमें आप फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट? यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द सी ओवर हियर। सो देखिए मैंने आपको बोला है कि फॉलो कैलकुलेट करना है तो ऑलवेज लुक अपॉन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल। ऑफ कोर्स दिस इज गिवन लाइक दिस, always look upon the right hand side of the production rule. So here in this grammar, the S is the start symbol. So the follow of start symbol is always taken as dollar by default. And if you will look upon the right hand side of the production rule, you are not finding S over here. So इसके अलावा कुछ नहीं होगा। Similarly, नेक्स्ट सिंबल क्या है? नॉन टर्मिनल क्या है? बी. सो व्हाट इज द फॉलो ऑफ बी? सो माय डियर फ्रेंड्स, द फॉलो ऑफ बी इज डी. सो जस्ट सी ओवर हियर. सो फ्रॉम द एस वी कैन डिराइव ए बी
DH, and from the D you can derive EF or epsilon. Yes or no? So if you will reduce, because the follow up B is equal to D, so if you will reduce the D, so what it will become? AB, EF and H. So this will become the final production. So now the E can be reduced by G or epsilon. So if you are reducing the E by G, what the production will look like? A, B, G, F, H, and in this situation, the follow of B will become the G. So the first time you are getting the follow of B is equal to G. But if you will reduce by the epsilon, how the production will look like? S2 A, B, F and H. Now the non-terminal F can be reduced by small f or epsilon. So if you are reducing the F by small f, it will look like S2 A, B, F and H. So here the follow of B is F, so it will become the F. But if you are reducing the F by epsilon, because there are two different production, so it will look like S2 A, B and H. Here the follow of B is equal to H. Got it, my dear friends? So finally the follow of B will become this. Similarly, you have to find out the follow of C. Follow of C. So what we are capturing from here? From here, the follow of C is equal to the follow of B. And from here, the follow of C is equal to follow of C. You cannot derive anything from here. वही तो find out करना है ना. So finally the follow of C is equal to follow of B. So this is equivalent to the follow of B. So ultimately this one will become G, H and. So next time let's try to find out the follow of D. So भाई प्रोडक्शन रूल में D कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, और D को फॉलो कौन कर रहा है? H. So blindly you can write it is a H. Next time let's try to find out the follow of. My dear friend, this is quite interesting. Please try to understand. See over here. See over here. E से रिलेटेड कौन कौन सा प्रोडक्शन है? E2 EF. See, E का फॉलो कौन होगा? F का फर्स्ट. So the F can be reduced by F, or it can be reduced by epsilon. So if you are reducing the F by F, so the production will look like D2 EF, or it will be look like, if you are reducing the F by epsilon, then the production will look like D2 E. So my dear friends, here what is the follow of E? F. And here what is the follow of E? The follow of D. So finally the follow of E is equal to F union follow of D. So ultimately it will become F, and what is the follow of D? H. So it will become H. Got it? Similarly, my dear friends, please try to find out the follow of F. So the follow of F. From here, what we can conclude? The follow of F is equal to follow of D, because only here the F is appearing. So the follow of F will become the follow of D. So this is the follow of D. And what is the follow of D? This is the H. So
this one will become the final answer. This is the follow of F, and this is the follow of H. Similarly, this is the follow of D, this is the follow of C, and so on. And in this manner, you can put the answer. In this manner, you can put the answer. So let's come to the next problem. Let's come to the next problem. So my dear friends, before moving to the next problem, once again I will tell you that never forget to use the code IFA to get minimum 10% discount. To get the minimum 10% discount, never forget to use the code IFA. So let's solve this question. Question number 3 and 4. I'm giving you a time of 1 minute to solve both the question. And my dear friend, this is the question of, please try to understand, this is the question which were asked in GATE 2012. So whatever the question I am considering over here, all are indirectly asked in your GATE exam. Already आपके GATE exam में पूछा जा चुका है, लेकिन directly नहीं, indirectly. So I am giving you a time of 1 minute. You just try to solve it. You just try to solve it. Tell me the answer of the first question. Any answer? All of you. See, the Unacademy is offering you the interactive live sessions. So until and unless you will interact, how the teacher will come to know? भाई आपको इंटरेक्ट करना सीखना पड़ेगा. आपके अंदर वो चीज होना चाहिए कि भाई मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अचीव करना है. आपको सीखना पड़ेगा कि भाई आगे कैसे बढ़ा जाए. बोलना सीखना पड़ेगा. Are you getting my point or not? You have to learn how to speak, because until and unless you are not able to put your view, you cannot learn anything. So dear students, please try to say something. ये फर्क नहीं पड़ता कि आप आंसर गेन कर पा रहे हो या नहीं. फर्क इससे पड़ता है कि आपने एफर्ट डाला कि नहीं. Are you getting my point or not? It hardly matter whether you are achieve your goal or not. The things which actually the matter is whether you have put your effort or not. क्योंकि एफर्ट डालने वाले आज नहीं तो कल उन चीजों को जरूर अचीव करते हैं जो वो सोच रखे हैं. So tell me the answer, all of you. Okay, see over here. I'm solving this numerical. Already the GATE 2012 numerical. So my dear friends, again we have to find out the first and follow set. See. From the S, this kind of production is given. See. From the S, you can derive AA, AB or BB, BA or epsilon. And what you have to do, you have to find out the first of S. So देखिए S से directly epsilon derive हो रहा है तो blindly you can write the epsilon. Now see over here. See over here. यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आप A से S डिराइव कर सकते हो और S फर्दर रिड्यूस किससे हो सकता है? एप्सिलॉन से. मीन्स व्हाट? फ्रॉम A टू एप्सिलॉन, यस और नो?
if you are deriving s from a and the s can be reduced by the epsilon, means a can be reduced by the epsilon. So what will happen over here? Once you will reduce the a by the epsilon, it will look like this: s to epsilon a ab. And what is the meaning of this? You can write s to aab. Now here, what is the first of s? This is the small a. Similarly, here it is a b, and from b you are deriving the s, and s can be reduced by the epsilon. Means the b can be reduced by the epsilon, and in this situation the first of s will become b. So you can write the yes or no. See, again we need to find out the first of a. So my dear friends, here the first of a is equivalent to the first of s. भाई s का फर्स्ट जो भी होगा वही a का फर्स्ट होगा, and that is nothing but epsilon a. And similarly, if you are trying to find out the first of b, so it will become the first of s, and this is nothing but epsilon a. And now let's try to find out the follow of each and everything. See, first of all, we are trying to find out the follow of s. So my dear friends, we are trying to find out the follow of s, and you know this is the start symbol of the grammar. So by default, we will consider the dollar, and from this production rule you can come to know the follow of s is follow of a and follow of s is follow of b. So what you can write? You can write dollar union follow of a, and again union follow of. So before finding out the follow of s, you have to calculate the follow of a and b. See over here, what is the follow of a? This is the small a and small b. And what is the follow of b? Small b and small a. So finally what we are getting? The follow of a is equal to ab, and again follow of b is equal to ab. Got it? So finally you can write dollar union ab union again ab. So my dear friends, this is the set. So what you can finally write? Dollar a comma. So the follow of a and b will be the small ab, and the follow of s will become dollar and. So these are the final answer. These are the final answer. These are the first set. These are the first set, and this is the follow set. This is the set. Now let's come to the next numerical. देखिए, न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है और अच्छे से आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए। सो अगेन आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 1 minute. Okay, I'm giving you a time of 1 minute to solve these questions. Please try yourself and get the answer. Fine? Okay, I'm just coming.
Any answer? All of you. See, see, see. Suppose we are trying to find out the first of S. First of S. So the first of S will become the first of A. First of S will become the first of A. Yes or no? And what is the first of A? Please try to find it out. It will become either D or BC. So my dear friends, it will become D union, or it will become first of B. Okay. So just see over here. From the S you can derive, from the S you can derive, from the S you can derive AB, sorry, ACB. Okay, Jyoti, ACB. Now the A can be reduced either by DA, so it will become DACB. So S can derive DACB. Here the first is D. Here the first is D. Similarly, S is deriving ACB. Once you will reduce the A by BC. Once you will reduce the A by BC, so it will become S2 BC again C B. Now this B can be reduced by G or epsilon. It can be reduced by G or epsilon. So if it is reducing by G, then it will become D and G. But if it is reducing by epsilon, the production will look like this: S2CCB. Now it will be a union of first of C. Union of first of C. So the C can be reduced by H or epsilon. So here the first of S will become either H, and once you will reduce by the epsilon, the S will derive C and B. And already you know that first of S is equal to first of C, that you have already calculated. Once you will reduce the C by the epsilon, the first of S will become the first of B, that we have already computed. So finally, this will be your final answer. Similarly, calculate the first of A. So my dear friends, the first of A is equal to D and the first of B. Already you have seen that the first of S is equal to first of A. So all these are the first of A. So you can write G and H. Similarly, the first of B. So my dear friend, the first of B is G and epsilon. This is the G and epsilon. Similarly, the first of C will be a H and epsilon. Got it, everyone? It will become a H and epsilon. So these are the things we have calculated over here. Now let's see what is the follow. I'm trying to calculate the follow of S. Follow of S. So to calculate the follow, we have to look upon the right hand side of the production. So by default, since this is the start symbol of the grammar, that's why the follow of S will become the dollar by default. So on the right hand side of the production rule, we are not getting the S.
So it will remains dollar as it is. Similarly, calculate the follow of A. Follow of A. So my dear friends, what is the follow of A? Where the A is appearing? Only here. So the follow of A is equal to C, and the C can be reduced either by H. So the follow of A will become H. But once you will reduce the C by epsilon, it will become AB. So the follow of A will become B. So let's see the first of B. So what is the first of B? This is the G. So it will become G. But once you will reduce the B by epsilon, so it will become S2A. So in this situation, the first follow of A will become the follow of S. So this one will become the dollar. My dear friends, I hope you are getting this point. So this is the one of the most important point that you have to understand. Now let's see. Let's see. Calculate the follow of B. Follow of B. See over here. From this production rule, you are getting the follow of B is equal to follow of S. Again, follow of B is equal to follow of S. And here the follow of B is equal to A. And here the follow of B is equal to C. First of C. So what we are observing over here? The follow of B is equal to follow of S union terminal A and union. The follow of B is equal to first of C. First of C. So just find it out over here. So follow of S is nothing but a dollar union. This is the A, because here you can see over here. Follow of B is equal to A and first of C. So my dear friends, I hope you have calculated the first of C. This is the this. The first of C is equal to this. Yes or no? So the first of C is H and epsilon. Epsilon could not be a follow set. So you can write the H. But my dear friends, what is the production rule which is given over here? See just over here. It is given as A to BC. And we have reduced the C by H. But whenever you will reduce the C by, if you will reduce the C by epsilon, then how the production will look like? This one, the follow of B is equal to follow of A. So union, this one will become follow of A. So ultimately it will look like dollar small a H and follow of A. What is the follow of A is given over here? D, G and H. So already we have a and H. So write the D and. So this one will become the follow of B. So my dear friends, any kind of questions could be asked from this particular things. If you know how to calculate the first and follow set, you can answer any kind of questions. Got it? Everyone. So this is the finally follow of B. Similarly, if you will try to calculate the follow of C. Already we have calculated the follow of B. So the follow of C is equal to follow of A. Yes or no? And here the follow of C is equal to B. And here the follow of C is equal to first of B. So what you can write? This is the small b union follow of A union follow of what? Follow of C is equal to follow of B. So just try to calculate these things, my dear friends. You will get the answer.
you will get the answer. But I hope you people are able to understand how to find out the first and follow set. So my dear friends, this was the first marathon course और ये सबसे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है एंड यू कैन से दिस इज द प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन अभी तक गेट में नहीं आए, बट दिस इज द प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस which can be asked in your gate exam. Are you getting my point or not? So just try to learn the concept and try to learn how to apply your concept to solve the numerical. और यही मेरा खासियत है. अगर आप मेरे किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन एश्योर यू that how to solve the numerical and how to apply your concept to solving the numerical. Got it, everyone? So ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें आपने मजा आया होगा. तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि ग्रामर को कैसे डिफाइन करना है, ग्रामर कितने टाइप के होते हैं, एम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस ग्रामर क्यों यूजफुल नहीं है कंपाइलर डिजाइन के लिए, अनएम्बिग्यूअस ग्रामर को हम लोग को कैसे यूज करना है कंपाइलर डिजाइन के लिए, एंड देन वी हैव लर्न अबाउट द फर्स्ट एंड फॉलो सेट. Because in my next marathon series, I will tell you how to use the first and follow set concept while doing the parsing. So parsing के point of view से learning about the first and follow set is the most important thing. So my dear friends, I am ending it over here. Actually, I have considered a lot of problem related with the passing, but I'm leaving this session right now. लेकिन ये यहाँ पर एंड नहीं है मेरे दोस्तों, ये यहाँ पर एंड नहीं है. आप अगर इस कोड को अप्लाई कर लिए, once you will apply this code, you will get minimum 10% discount, my dear friends. And don't forget to press the bell icon button for the notification. अगर आप चाहते हो कि मेरे नेक्स्ट सेशन को आप देख पाओ तो आपको बेल आइकन बटन को प्रेस करना पड़ेगा, सो दैट व्हेनेवर आई विल कम ऑनलाइन यू विल बी एबल टू वॉच ऑल माय अपकमिंग वीडियो. एंड माय डियर फ्रेंड्स, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं. एंड पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स. This is for those students who are attending this session. जिसने भी ये सेशन अटेंड किया है उसके लिए ये पर्टिकुलर पार्ट है कि आप अपने कमेंट्स को रखिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा है. अदरवाइज ये जो सेशन है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगा, तो अगर आप इस पूरे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को देखते हो, समझते हो, तो आप अपने कमेंट्स को पुट अप कर सकते हो. बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, योर वन कमेंट्स will inspire the many other students. Got it? So in my next lecture, I will talk about two different things. Please try to understand. मैं आपको बता दूं. Please try to understand. I will take compiler design marathon 2, where I will discuss two different things. One is the top-down parsing. Second one is the bottom-up. So to explore yourself about the marathon 2, never forget to attend this particular session, top down and bottom up. Fine everyone, so take care, good night, मस्त रहिए लाइफ में. Again we will meet on tomorrow. Just stay happy and take care yourself. Bye. मस्त रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी भी लाइफ में हारते नहीं है. ओके.